हेलो गाइस, वेलकम टू ixamBee। जैसे कि आप लोगों की सेबी फेज 1 की रिजल्ट आ चुकी है, सेबी ग्रेड ए का। नाउ द फेज 2 इज जस्ट अ फ्यू डेज अवे। सो हम लेकर आए हैं आपके लिए अ सीरीज विच विल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम फिनांस एंड इकोनॉमिक्स। एमसीक्यूज रहेंगे आपके लिए फॉर योर प्रैक्टिस। सो हियर विल बी सीइंग जो प्रोबेबल टॉपिक्स हैं, जो करंट हैपनिंग्स हुए हैं अभी रिसेंट टाइम्स में, वहां से कुछ स्टैटिक न्यूज ऑन finance as well as on economics. So before going forward, please subscribe to our channel and press the bell to be notified on our content जब भी हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोस लाएं, ताकि आपको पता लग जाए। If you have any queries with respect to your preparation, feel free to shoot us a mail at hello@ixamBee.com, or you can always call us at 9205524028 or visit our site, that is ixamBee.com. As mentioned, grade A assistant manager के लिए phase 2 में we'll see some finance and economics MCQs. This is the first question. The theme of Financial Literacy Week 2022, it means this year. What is the theme for this year's Financial Literacy Week 2022? Please pause the video and try to answer. Yes, the theme is Go Digital and Go Secure. Please remember, from February 14th through 18th, it was observed as Financial Literacy Week 2022. Who is the organization that observes this? RBI. Yes, Reserve Bank of India observes that. And guys, please remember, this year's theme was Go Digital and Go Secure. And please remember another fact, that RBI has been observing this Financial Literacy Week since 2016. Next question, the National Strategy for Financial Education, or NSFE, for the period of 2020 to 2025 has been prepared by which of the following organizations? Yes, the answer here is National Center for Financial Education. ये एक स्ट्रेटजी है और एक आप बोल सकते हो एक फ्रेमवर्क है फॉर फिनेंशियल एजुकेशन। सो ये फ्रेमवर्क विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2020 टू 2025। तो ये इसे बनाया किसने है? नेशनल सेंटर फॉर फिनेंशियल एजुकेशन। इसके बारे में हम ज्यादा देखते हैं क्या है ये। आप देख रहे हो, नेशनल सेंटर फॉर फिनेंशियल एजुकेशन इन कंसल्टेशन विथ ऑल द फिनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स। ये जो नेशनल सेंटर ऑफ फिनेंशियल एजुकेशन है, दिस ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेड विथ ऑल रेगुलेटर्स लाइक आरबीआई, सेबी, आईआईडीआई, पीएफआरडीए। सो उसके बाद जाके वो फ्रेमवर्क बनाया गया। एंड नाउ आप देखो कि इट हैज गिवन अ 5C अप्रोच, जिससे हम फिनेंशियल इंक्लूजन और फिनेंशियल एजुकेशन हमारे कंट्री में देंगे। दोस 5C's आर कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, communication, collaboration. You need to be aware about this 5C approach as well. And please remember, this National Center for Financial Education NCFE in consultation with all the financial sector regulators ये framework को लाए थे। The next question, SEBI recently restructured its Advisory Committee on Investor Protection and Education Fund, or IPEF, under the chairmanship of whom? It is asking, जो सेबी का इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड है, उसको अभी रिस्ट्रक्चर किया गया है रिसेंटली। अभी उसका चेयरमैन कौन है? यस, द आंसर इज नन ऑफ द एवर, बिकॉज ये चेयरमैन, जो नए चेयरमैन है, जी महालिंगम। सो एज पर द जब रिसेंट रिस्ट्रक्चर हुआ है, तो एज पर दैट रिस्ट्रक्चर, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड जो कि सेबी का है, उसका चेयरमैन है जी महालिंगम। Here is the next question. India Industrial Land Bank, or IILB, is what? These are your options. Please pause the video and try to answer. The answer here is C, a GIS enabled database of industrial areas and clusters. So by the name bank, यहाँ पे आप मत सोचना कि ये कॉमर्शियल बैंक है। ये एक GIS enabled डेटाबेस है, ठीक है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक ऐसा डेटाबेस है जहाँ पे सपोज दिस इज अ सिटी, तो यहाँ पे दीज लैंड्स आर अवेलेबल फॉर सेटिंग अप न्यू बिजनेसेस। तो इस सारे लैंड पीसेस का अवेलेबिलिटी हमें दिख जाएगा एक पोर्टल में। दैट पोर्टल इज कॉल्ड इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, ठीक है।
And who is the who is the organization that created this IILB? It is Department for Promotion of Industry and Internet Trade, DPIIT. Here is a question for you. This department comes under which ministry? The question is, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, it comes under which ministry? Okay. So please remember, IILB is not a bank, but it is a database that consists of industrial areas and clusters. Here is the next question about KYC, know your customers. What is the main objective of KYC guidelines followed by banks? जो बैंक KYC follow करता है guidelines, उसका main objective क्या है? Or which of the following statements are correct about KYC guidelines? Please pause the video and try to answer. Yes, 1 and 2. It helps prevent banks from using criminal networks, of course, क्योंकि आपको पता है ये जो कस्टमर्स हैं, जो बैंक का कस्टमर्स है, उनका आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ लिया जाता है. ऑब्वियसली जो क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं, so they will not be very interested to reveal their identity. KYC helps the banks to communicate with clients and financial transactions, of course, क्योंकि उनके पास उनका communication address भी दिया जाता है, तो in case requirement होता है तो banks can also communicate to the customers. For KYC, only identification evidence is required. No, only identification evidence will not be sufficient. हमें पता है address proof is also required. So please remember, address proof as well as ID proof. These are the documents that are needed for KYC by banks. So the DSIPs banks are classified into how many buckets? The answer is 5 buckets. ठीक है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स और DSIPs ऐसा बैंक्स हैं जो इतने बड़े हैं, अगर वो फेल करते हैं दैट विल हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी. ऐसा क्यों? सपोज एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमें पता है कि व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर्स बेस दिस बैंक हैज. आप SBI के कस्टमर्स हर एक गांव में मिल जाएंगे, हर एक सिटीज में मिल जाएंगे, मेट्रो सिटीज में मिल जाएंगे, एंड कितने वाइड रेंजिंग एक्टिविटीज हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का. अगर इन एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट SBI फेल करती है तो उसका इम्पैक्ट कितने सारे लोगों पे होगा, एंड व्हाट काइंड ऑफ बैड इम्पैक्ट इट विल हैव ऑन आवर इंडियन इकोनॉमी. दैट इज द रीजन some banks are categorized as DSIPs, that is domestic systematically important banks. क्यों ऐसा करते हैं? ताकि RBI इन पे ज्यादा अच्छे से नजर रख पाए. ठीक है, ज्यादा अच्छे से नजर रख पाए क्योंकि इतने बड़े बैंक्स हैं, यहाँ पे कुछ गलत चीज ना हो जाए. तो आप देखो यहाँ पे DSIPs जो हैं, RBI वो DSIPs को भी 5 बकेट्स में क्लासिफाइड करता है, दैट इज बकेट 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, अभी आप देख रहे हो RBI रिटेन्ड SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक एज DSIPs. ये 3 बैंक्स आर देयर इन द DSIPs. आपको पता होगा ये 5 बकेट में से 5th बकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, ऐसे बकेट्स में ये जितने भी बैंक्स DSIPs में होंगे दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू दिस बकेट्स. हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो कौन से बकेट में आता है? हियर इज अ क्वेश्चन, आउट ऑफ दिस 5 buckets स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कम्स अंडर व्हिच बकेट? हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज और CICs और क्रेडिट ब्यूरोज आर रेगुलेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर. यस, द आंसर इज RBI. प्लीज गाइज यहाँ पे अच्छे से याद रख लो, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिट ब्यूरोज एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, नॉट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय SEBI, बट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जैसे कि आपको पता है ये CIBIL स्कोर आपका आता है ना, वो CIBIL एंड ऑल, सो दीज आर ऑल रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यहाँ पे और एक रूल है, द कंपनी मस्ट बी ओन्ड एंड कंट्रोल बाय रेजिडेंट इंडियन सिटीजन्स. ठीक है, जो भी ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्रिएट करेगा, he or she must be a resident of India. What does the C stand for in LCR? LCR एक रेशियो है. What does the C stand for LCR? It is coverage, the liquidity coverage ratio. ठीक है, liquidity coverage ratio refers to the proportion of highly liquid assets held by financial institution. जो एक बैंक मान लो उसका एक शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है,
उसको फुलफिल करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ एसेट्स दिस बैंक हैज, वो जो रेशियो निकलता है दैट इज एलसीआर। ठीक है, इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप बेसल 3 नॉर्म्स को अच्छे से देख लीजिए, फिर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एक शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन के लिए एलसीआर मेंटेन करते हैं बैंक्स। हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, एज पर द बेसल 3 नॉर्म्स, ये तो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के लिए एलसीआर हो गया। फॉर लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन कौन सा रेशियो फॉलो करना होता है बैंक्स को? आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, फॉर लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन व्हिच रेशियो इज बीइंग फॉलोड बाय द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज पर बेसल 3 नॉर्म्स? ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन पे। Here is another question, please read the statements. Here we are talking about insurance companies. Please pause the video and try to answer. Yes, all of the above statements are correct because यहाँ पे we are talking about जैसे हमने देखा ना डिसिप्स, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, यहाँ पे डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सेम फंडा यहाँ पे भी है, टू वीक और टू इम्पोर्टेंट टू फेल। अगर इतना बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है तो आप सोचो कितने लोगों ने यहाँ से इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह लिए होंगे। तो इन केस दिस कंपनीज फेल तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत होगा इकोनॉमी पे, मार्केट पे। So that is the reason these insurers are categorized into DSIs. That is यहाँ पे आप देख रहे हो कि टू वीक और टू इम्पोर्टेंट टू फेल। ये जो इंश्योरर्स हैं रेफर टू इंश्योरर्स such size, market importance, domestic and global interconnectedness. So these are the certain criteria through which these insurers are categorized into DSIs. तो यहाँ पे आप देखो द कंटिन्यूड फंक्शन ऑफ दिस इंश्योरेंस इज क्रिटिकल फॉर द अनइंटरप्ट अवेलेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज टू द नेशनल इकोनॉमी। जो हमने देखा अभी इतना बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, उस पर अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो दैट विल हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर economy as well as the market. So that is the reason we have categorized these insurers as important. The last question of the session, as per which article of the constitution the GST council was created? As per which article of the constitution the GST council was created? Yes, the answer is article 279. ठीक है, so we're talking about GST council. So it was created under article 279A. So that makes this council a constitutional body. ठीक है, the body is created through an article of Indian Constitution is a constitutional body. जो एक पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया जाता है जो बॉडी को, उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस डिस्टिंक्शन। Here is a question for you, who is the chairman of this GST council? Who heads the GST council? Please type your answer in the comment box. So this is it guys, hope you have liked the session. हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लाएंगे आपके SEBI Phase 2 के लिए for economics and finance. If you have liked the session, please share this session or share this video with your friends, and do not forget to subscribe to our channel and press the bell to be notified on our content. Have a good day guys.